Hello and welcome back to Witsol. In today's class, we are going to learn about different sounds in English language. English language में sounds दो तरह की होती हैं, consonant sounds and vowel sounds. To understand how English sounds phonemes are divided into vowels and consonants and how they are produced. अब हमें English language बोलना सीखना है तो सबसे पहले एक concept clear करना है. There's a difference between alphabets and their sounds. Alphabets और उनकी sounds में फर्क है. Here we are talking about sounds, consonant sounds and vowel sounds. So let's start the class with the introduction to English sounds. अब English alphabets हमें पता है कितने हैं, उनमें से 5 vowel sounds हैं, बाकी सब consonant alphabets हैं. But sounds कितनी हैं और उनमें से कितनी consonant sounds हैं और कितनी vowel sounds हैं, let's see. So English has 44 speech sounds in total. 44 sounds हैं जिनमें से these sounds are divided into 20 vowel sounds including diphthongs and 24 consonant sounds. अब 24 consonant sounds हैं, 20 vowel sounds हैं. Letters are not equal to sounds. Keep that thing in your mind. English spelling does not always match pronunciation. और यहाँ पर हमें फील होना शुरू होता है कि G की साउंड एक जगह पर ग है, एक जगह पर ज है. C की साउंड एक जगह पर ख है, एक जगह पर स है. तो ऐसा क्यों है? Because letters are not always equal to their sounds. For example, the letter C sounds like K in cat, but S in city. So, let's start with what are consonant sounds. अब consonant sounds कौन-कौन सी हैं? Consonant sounds are produced when airflow is blocked or restricted by lips, tongue or teeth. जब हम words बोलते हैं तो उनकी sounds बनाते हुए airflow ब्लॉक होता है. There is some friction or closure during articulation. तो difference कहाँ पर आता है? Articulation में, sounds में. For example, प, ठ, ख, ब, ड and g. Similarly, f, v, s, z, sh, z and h. Similarly, m, n, n, a, r, j and v. तो इन सब में एयर फ्लो कहीं ना कहीं ब्लॉक था. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वॉवल साउंड्स. इफ वी टॉक अबाउट कॉन्सोनेंट क्लासिफिकेशंस बाय द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, तो आर्टिकुलेशन में अगर हम देखा जाए किस तरह से अदायगी है उसमें देखा जाए तो प्लॉसिव्स होते हैं, फ्रिकेटिव्स होते हैं, एफ्रिकेटिव्स होते हैं, नेजल साउंड्स होती हैं और अप्रॉक्सिमेंट्स होते हैं. अब प्लॉसिव्स वो होते हैं जहां पर हमें रुकना पड़ता है, जहां पर एयर का पैसेज रुक जाता है बिल्कुल, जैसे प, ब, ट, ड, ख एंड ग. फ्रीकेटिव्स क्या होते हैं? व्हेन एयर पासेस थ्रू नैरो गैप कॉजिंग फ्रिक्शन, जैसे फ, एयर पास हो रही है लेकिन बहुत नैरो गैप है. व, स, ज, श, z एंड ह. सो द नेक्स्ट वन इज affricatives. अब affricatives होते हैं, they are combinations of plosives and fricatives. For example, ch और j, church, judge. पूरी तरह आवाज रुक भी नहीं रही और बहुत ज्यादा स्ट्रेस के साथ वॉइस पास हो रही है हमारे माउथ से. Next we'll talk about nasal sounds. Air escapes through nose, n and So nasal sounds में air passage होती है but it passes through the nose. The next one is approximant. Approximants जो होते हैं उनमें air flow partly blocked and no friction. For example, l, r, j and v. तो air flow थोड़ा सा रुकता है but stressed sounds नहीं होती, कोई friction नहीं है air flow में. Moving on to classification of consonants by place of articulation. अब कहाँ से आवाज निकल रही है उसकी बेस पे कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स डिफरेंट में डिवाइड की गई हैं. द फर्स्ट वन इज bilabial. Labial, here is the word from lips. Bi means two. तो both lips touch, तो वो bilabial sounds होंगी, जैसे प, ब, म. हम दोनों लिप्स को ज्वाइन करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं. दे आर कॉल्ड bilabial sounds. Labiodental. Labio मतलब लिप्स, डेंटल मतलब टिथ. सो लिप और टिथ मिलके साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फ, v. So our teeth are touched to our lips and the sounds produced are called labiodental sounds. Moving on to dental sounds,
अब कुछ वॉइसेस हैं जो सिर्फ टिथ और टंग से प्रोड्यूस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, थिन, दिस. सो our tongue is touching our teeth, and that is called dental sounds. Next is alveolar sounds. Alveolar sounds are produced when our tongue touches the ridge behind our teeth. For example, th, d, s, z, n, and l. So tongue is touching the ridge behind the teeth. Teeth के पीछे जो जगह है, जो ridge है, उसको tongue touch कर रही है, तो sounds produce हो रही हैं alveolar sounds. Palato-alveolar. Palato-alveolar sounds produce होती हैं when our tongue near hard palate. अब when our tongue touches near hard palate, back side of mouth. For example, sh, z, s, and j. Similarly, the next sound is velar sounds. अब velar sounds कहाँ से produce होती हैं? Back of tongue and soft palate. Soft palate बिल्कुल throat के पास. जो soft palate है उसको जब हमारी back of tongue touch करेगी, जैसे क, ग, and न. अब tongue हमारी soft palate को touch कर रही है right from the start. They are called velar sounds. Next are glottal sounds. Glot is throat. So sounds that are produced from the center of throat, they are called glottal sounds. For example, h, h. अब हमारा mouth is not working. The sound is straight away coming from throat. Moving on to voiced versus voiceless consonants. अब voiced consonants are vocal cords vibrates. अब हमारे vocal cords होते हैं जहां से air pass होके sound produce करती है. तो अगर वो vibrate करेंगे तो voiced consonants होंगे. For example, b, d, g, v, and z. And if we talk about voiceless consonants, there's no vibration. And for example, p, t, k, f, and s. Let's try this. Touch your throat and say s. So in s, no vibration, so it's a voiceless consonant. But on the other hand, if we say z, so in z, there is vibration of our vocal cords, so it's a voiced consonant. Now let's talk about vowel sounds. अब vowel sounds भी तो 20 हैं. Let's talk about that. They are produced when air flows freely through the mouth. जब air हमारे mouth से बिल्कुल freely pass करेगी तो vowel sounds produce होंगे. No obstruction by tongue, teeth or lips. They are determined by tongue position, lip shape and length of sound. For example, I के different sounds हैं, A की, U की. Let's see what are these different sounds. So, if we talk about classification of vowels by tongue position, front vowels are I, and I. And central vowels are A, and E. Back vowels are U sounds, for example, U, E, and A. So, if we talk about length, so short vowels are there and also long vowels are there. So here's a fun fact that diphthongs are also gliding vowel sounds. अब gliding sounds में ये होता है कि two vowel sounds glide together within one same syllable. जब दो vowels एक साथ लिखे जाएंगे alphabets में तो उनकी sounds एक syllable में एक से दूसरे पे shift होंगी, उनको diphthongs कहते हैं. For example, A, say, I, my. For example, oi in boy, or ow. For example, now, and o, for example, in go, and ear, here. Similarly, a like here, and then u, is a o and u sound, tour. The most common English sound is the schwa sound. In English, it's the most frequently used sound in English language. It's weak, neutral, and appears in unstressed syllables. For example, let's talk about the word ow, about, teacher, problem. That was all about the sounds in English language, and we'll be back with another exciting video with Witsol tomorrow.